जब शुरू कर रहे हैं तो नहीं, अब छोड़ ही देंगे. Okay, so definition of scalp is the soft tissue covering the vault. Please मेरी तरफ देखो, जो आ रहा है आने दो. Definition is what? Soft tissue covering the vault of the skull. Okay. What is the extent? Now that's a very important question. Even he was asking, what is the extent? कहाँ से कहाँ तक है? Okay, तो skull में एंटीरियरली क्या एक्सटेंट है इसका, पोस्टीरियरली क्या एक्सटेंट है, और दोनों साइड में क्या एक्सटेंट है. ओके, तो रिमेंबर इट एज एस 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 एंड एस, चारों तरफ एस है. एंटीरियरली इट इज एक्सटेंडिंग अप टू द सुपीरियर eyebrows over here. Okay, supraorbital margin कह सकते हो, up to the supraorbital margin, यहाँ तक. ये अभी बाहर से eyebrows जो दिख रहा है, okay, so it's extending up to the supraorbital margin. Anteriorly कहाँ तक है? यहाँ तक है scalp. ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक. supraorbital orbit का upper bar, supraorbital margin. पीछे skull जब पढ़ोगे तो वहां पर occipital region में इस तरह से पीछे लाइंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूकल लाइन. न्यूकल है, NUCHAL, न्यूकल मीन्स नेक. तो एक ऊपर रहता है सुपीरियर न्यूकल लाइन, एक नीचे इंफीरियर न्यूकल लाइन, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, और एक और रहता है बहुत फेंट हाईएस्ट न्यूकल लाइन. तो अगर मिड लाइन से ऐसे इस तरह से बिल्कुल ट्री पैटर्न में देखोगे, देयर आर लाइन. तो सुपीरियर न्यूकल लाइन, इंफीरियर न्यूकल लाइन, हाईएस्ट न्यूकल लाइन. एनीवे, द स्कैल्प एक्सटेंड अप टू द सुपीरियर न्यूकल लाइन. कहां तक? सुपीरियर न्यूकल लाइन. न्यूकल NUCHAL. तो एंटीरियरली सुप्राऑर्बिटल मार्जिन, पोस्टीरियरली सुपीरियर न्यूकल लाइन. ठीक है. सिमिलरली साइड में यहां पर हम लोग का टेम्पोरल रीजन में दो लाइंस होती हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल लाइन. ऊपर वाला सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, नीचे वाला इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. ठीक है, स्कल जब पढ़ोगे तो ये यहां पर साइड में सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक एक्सटेंड करता है. ठीक है, तो क्या एक्सटेंड हो गया? सुप्राऑर्बिटल मार्जिन से सुपीरियर न्यूकल लाइन, आगे से पीछे, और यहां पर सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. तो एस 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 एस, 4 एस. ठीक है मैत्री, क्या क्या हो गया? 4. ऑर्बिटल मार्जिन टू सुपीरियर न्यूकल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. ओके, इज इट क्लियर? इवन दो सम बुक्स से इसकी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से नीचे zygomatic arch तक आता है, but I'll go by the old school of thought which says एस 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 एस. ओके, 4 ऐसे एक्सटेंड. ठीक है, हाँ हाँ, वेरी गुड. दिस इज, हाउ कैन दिस बी स्कैल्प? दिस इज द फेस, है ना? तो दिस पार्ट विच इज द फोरहेड इज कॉमन बोथ टू द फेस एंड द स्कैल्प. ये दोनों के रीजन में आ जाता है. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. ये फेस में भी आता है, यहाँ वाला फोरहेड, और ये स्कैल्प को भी हम लोग यहाँ तक मानते हैं. ठीक है, तो द एक्सटेंट इज फ्रॉम द सुप्राऑर्बिटल मार्जिन. समझ में आया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? सुप्राऑर्बिटल मार्जिन टू सुपीरियर न्यूकल लाइन. यहां सुपीरियर बोलोगी, यहां सुपीरियर बोलोगे, यहां सुप्रा बोलोगे. सुप्राऑर्बिटल मार्जिन टू सुपीरियर न्यूकल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. इज इट क्लियर? एक्सटेंट. लेयर्स अभी हमने बता दिया. व्हाट आर द लेयर्स? फर्स्ट लेयर स्किन, which is having lots of hair, sweat gland and sebaceous glands. Okay, and hair follicles. Second layer is the connective tissue layer, which is dense connective tissue layer.
okay, which is divided by fibrous septa into small compartments, each compartment having blood vessels, artery, veins, nerves. The veins are the emissary veins, and these veins are connecting the veins on the outside of the scalp, outside of the skull, to the veins on the inside. The inside veins are called intracranial venous sinus. So this is a very potential site of spread of infection from the outside of the scalp. तो अगर छोटा सा भी अगर हेड इंजरी हुआ है और तुमको डाउट हो रहा है कि ये इन्फेक्शन जा सकता है, तो क्या करोगे? एंटीबायोटिक चला दो, इन्फेक्शन होने ही मत दो. उसने अगर एंटीबायोटिक चला दिया होता तो वो इन्फेक्शन नहीं जाता. इसने एक डिटॉल विटॉल लगा के और पेन किलर दे के भेज दिया डॉक्टर ने, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन अंदर हो सकता है इन्फेक्शन अंदर ना जाए, हर बार नहीं जाता है, बट जाने का चांस है. अंदर चला गया तो ब्रेन का इन्फेक्शन बहुत सिवियर होता है, डेथ भी हो सकता है. तो अगर भी इस एरिया में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चला दो. अगर तुमको डाउट लग रहा है कि इन्फेक्शन को, अगर देख रहे हो कि हाँ बहुत स्वेलिंग है और साथ में पस फॉर्मेशन हो रहा है, तुरंत एंटीबायोटिक चलाओ and see to it that it is cured. So that is the second layer. Third layer, second layer has many things. First thing, the emissary vein can bring the infection inside. Second thing, profuse bleeding because it's highly vascular. Third thing, prolonged bleeding. Why? Because the walls of the vessels are attached to the fibrous septa, so they cannot retract. So the bleeding is prolonged. Is it clear? Third thing. Then another thing, all the three layers are fused together and they move on the fourth layer, which is the loose areolar tissue. Okay? And this fourth layer, which is looking very, very innocuous, very, very benign, is actually the dangerous area of the scalp. It's called the dangerous area of the scalp. Why? ये fourth layer जो है loose areolar tissue है, वो dangerous area of the scalp कहलाता है. Because it's called dangerous area because of the same reason. Because all the emissary veins which are going from the second layer to the, they are passing through the third layer. ठीक है? तो generally जहाँ पर जगह रहेगा वहीं पर तो infection फैलेगा. तो थर्ड लेयर में जब इन्फेक्शन फैलता है तो वो एमिस्ट्री वेन के थ्रू अंदर जा सकता है. ठीक है? फोर्थ लेयर, सॉरी, या वेरी गुड. फोर्थ लेयर में जो लूज लेयर है वहां पर इन्फेक्शन जब फैलेगा तो इट कैन गो थ्रू द एमिस्ट्री वेन. So it's called the dangerous area. Another thing, I'm telling you a very interesting case which was asked to us in our exam. It can be asked to you all also. A student, a boy who had a fight again. Boys always have a fight. So he came to the emergency ward and he was, no, not a fight. He had a motorcycle accident. Okay. So he was taken to the emergency ward and he was told कि मुझे ऐसे head injury मेरा सर टकरा गया था. So he was examined. He was kept under observation and the doctor found that there was nothing wrong. BP ठीक है, blood pressure ठीक है, pulse ठीक है and sensorium normal है. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि उसे सुनाई कम दे रहा है या वो बेहोशी ऐसा लग रहा है. Sensorium is fine. BP pulse. So after a few hours the doctor said ठीक है, आप इसे ले जाइए. Okay. After 2 days the same child came to the hospital with a black eye. Black eye. आँख जो था, eyelid जो था, that was black. So what is the significance of black eye? And why was it after 2 days? But why would it reach to the eye? Scalp. Oh, कितने अच्छे टर्म्स ये वैस्कुलर नेक्रोसिस यूज कर लो, सब कुछ भी मत छोड़ना जितना आता है. ये क्या स्केफॉइड बोन है क्या ये वैस्कुलर नेक्रोसिस? अच्छा है यार, तुम्हारे एज में हम भी यही सब करते थे, बड़े बड़े वर्ड यूज करते थे. होता क्या है ना, now this is where I take you back to the third layer, which is very, very important. Then I'll explain you why.
This is the layers of the scalp, okay? Oh. So you can see the first layer having the hair follicles. Second layer, you can see the septa. And you can see how the veins are attached to the walls of the vessels are attached to the walls of the septa. दिख रहा है? So they are small compartments. और जितना लूज देख रहे हो इतना भी नहीं, ये भरा रहता है with all vessels and nerves and connective tissue, loose connective. ठीक है, so this is all dense, very dense. Then third layer, you can see over here, this is the emissory veins connecting the veins over here to the. There is the aponeurotic layer. This green thing you see is the aponeurotic. ये aponeurotic layer है. और ये जो देख रहे हो ये loose connective tissue, ये जो मकड़े के जाल टाइप का बनाया है, this web. Okay, this is the loose connective tissue, है ना? So what happens when there was, now let's come to the third layer. I don't know, I've not seen this PPT also. I've taken from Dr. This is the third layer. Okay. Actually बहुत अच्छा diagram नहीं है. But anyway, I told you you have the frontal two muscles. Please listen very carefully and try to understand. दो muscles हैं आगे, frontalis, दो हैं पीछे, occipitalis, और बीच में एक फाइब्रस शीट है जिसका नाम दिया गया है, बहुत ही प्यारा नाम, गेलिया एपोन्यूरोटिका, है ना? गेलिया एपोन्यूरो, आई जस्ट लव दिस नेम, गेलिया एपोन्यूरोटिका. ठीक है, तो अगर मसल की बात करोगे तो पहली चीज क्या आता है? ऑरिजिन, इंसर्शन. तो फ्रंटालिस शुड बी हैविंग अ ऑरिजिन एंड अ इंसर्शन, and occipitalis should be having an origin and an insertion. Is it clear? So let's first talk about the frontalis. The frontalis starts from the anterior end of the galea aponeurotica. जो anterior end है galea aponeurotica का, वहां से frontalis का origin हो रहा है. galea aponeurotica से. Generally a muscle starts from a bone and ends in a bone. है ना? Generally क्या होता है? Tip of the coracoid process, radial tuberosity, यही सब है ना? बट यहाँ उल्टा हो रहा है. यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम द गेलिया एपोन्यूरोटिका, एंड इट्स गोइंग एंड इट्स नॉट इंसर्टिंग इनटू द बोन इन द फ्रंट. यू वुड हैव इमेजिन्ड इट वुड इंसर्ट इनटू द सुप्राऑर्बिटल मार्जिन. नो, इट गोज एंड एंड्स इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अपर आईलिड और ऑफ द दिस पार्ट, द आईब्रोज. यहाँ पर जो आईब्रोज है ना, वहां पर कनेक्टिव टिश्यू मतलब स्किन में जाके इंसर्ट हो रहा है. कहाँ पर? स्किन में. स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें. और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? गेलिया एपोन्यूरोटिका से. ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब नीचे आगे अटैचमेंट बोन में नहीं है तो उसके नीचे जो लेयर है वो आगे तक चला गया. अगर वो अटैच हो जाता तो फिर वो रुक जाता वहां तक. बट because of the no bony attachment of the frontalis is attached, origin is from the galea aponeurotica and insertion is into the skin of the eyebrows, a connective tissue of the eyebrows. Similarly, the occipital starts from a bone. It starts from the superior nuchal line, lateral part of the superior nuchal line. ठीक है, तो मान लो यहाँ सुपीरियर न्यूकल लाइन है, तो ये lateral part of superior nuchal line, insertion is into the galea aponeurotica. ठीक है, so where is the occipitalis muscle arising from? Lateral part of superior nuchal line. Insertion, galea posterior part of galea aponeurotica. Frontalis arising from anterior part of galea aponeurotica. Insertion, connective tissue of the eyebrows, connective tissue of the eyebrows. ठीक है, of the forehead. यहाँ पर forehead में जो connective tissue है वहां पर near the eyebrows. So frontalis is having no bony origin or insertion. Okay. Now what happens? And galea aponeurotica is attached. What is the extent of the galea aponeurotica from here?
then what happens? The galea epineurotica is lying in between these two muscles, है ना? But the galea epineurotica also comes in this gap over here. And यहाँ पर external occipital protuberance होता है. वहाँ पर इस diagram में नहीं दिखा रहा है. It will go in between. If it is drawn in red, you will draw a red cilia, which is insert over here. It also goes in between the two. There is a gap between the two head of frontalis. ये diagram गलत है. There is a gap between. It's almost V-shaped. So the galea epineurotica is mainly in the mid part, but it also goes between the gap between the two frontalis and two occipitalis. Okay. और पीछे गेलिया एपिन्यूरोटिका यहाँ पर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस में इंसर्ट हो जाएगा और आगे यहाँ पर आके एंड हो जाता है मिड पार्ट ऑफ में. ठीक है. So anyway, what I am trying to tell you that the frontalis has no bony structure. देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है. You can see the frontalis and the occipitalis, and you can see and this window has been enlarged and shown over there. Yeah, now coming back to the patient that I was talking about. The patient fell down. Okay, so he had injury and some of the vessels had ruptured over here. Okay, some of the vessels had ruptured over here. Supposing this arteries and veins, they have ruptured over here. So what happened? The bleeding started. The bleeding started. So where will the bleeding go? Into the loose areolar tissue. कहाँ पर जाएगा? Loose areolar tissue में जो जगह है ना? तो जब यहाँ पर डैमेज, थर्ड लेयर के बाद जो फोर्थ लेयर है वहीं पर डैमेज होता है, वहीं पर फ्लूइड कलेक्शन होता है. तो जब फ्लूइड कलेक्शन होगा तो it will start spreading. So while the patient was sitting, the fluid had not spread. It was slowly coming out. But when he went home, it was already going out and out. और जब फैलने लगा, जब पूरा कल में फोर्थ लेयर को जब ऑक्यूपाई कर लिया ब्लड, तो फाइनली वो कहाँ जाके एंड हुआ? सबसे जो ग्रेविटेट करके कहाँ जाएगा? सबसे लोअर पार्ट आगे, और आगे कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है तो वो आईलिड में चला गया, अपर आईलिड, और वो ब्लैक आई कॉज किया. वहां पर एक हिमेटोमा, तो काला आंख लेकर के पेशेंट आया. तो पता चला दिस इज द इंजरी इज नॉट इन द आई. So it doesn't mean that every time there is a black eye, so you will say, nahi, this is in the fourth layer. Nahi, it can be because of there are many causes of black eye, but here the cause was the injury in the scalp, in the fourth layer of the scalp. There was bleeding, the bleeding collected, and over a period of time, it filled the fourth layer and it gravitated down to the, and there was no bony attachment, nahi to ruk jata hai, yahan par bony attachment hota hai agar frontalis ka. So it went down into the upper eyelid, and that caused a black eye. So black eye is a common short note. और बुक से पढ़ लेना है ना तुम लोग इसके बारे में. हाँ, this is basically you evacuate the blood. Yes, of course it can be treated. You drill and you take the blood out, clot out. Huh? No, concussion is a different thing. Concussion is it can be it's a very wide spectrum of things that can be concussion. You can talk about your brain पर आएंगे और सब है ना. Then another thing, another very interesting thing. There was again a head injury, okay, and there was this time there was bleeding over here in the intracranial venous sinus inside the skull. Inside the skull there was bleeding. तो अगर inside the skull bleeding हो रहा है तो ये कम डेंजरस है कि ज्यादा डेंजरस है? ज्यादा डेंजरस है ना? क्यों? स्कल के अंदर अगर हो रहा है तो क्यों ज्यादा डेंजरस है बाहर होने से? वेरी गुड. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, ब्रेन को दबाएगा. स्कल इज अ वेरी हार्ड थिंग, इट वो कांट एक्सपैंड, so all the blood will collect and press the brain and the patient will almost collapse immediately. बहुत fast मतलब ये होता है. And now this patient also had a fracture of the skull.
ब्लीडिंग तो हो ही जाता, इंट्राक्रेनियल, इट हैड अ फ्रैक्चर ऑफ द स्कल. तो कैसे? हाँ, he is the most intelligent boy in the class, one of the most at least. अभी most तो नहीं कहेंगे. अगर फ्रैक्चर हुआ तो दैट इज द गुड न्यूज. यूल से कैसा डॉक्टर है, कह रहा है फ्रैक्चर हुआ, गुड मतलब गुड न्यूज इन द सेंस कि इट्स अ बैड न्यूज बट इट्स अ लेस बैड न्यूज, बिकॉज वॉट एवर ब्लड वॉज कलेक्टेड इन साइड will come out of the fracture and go in the fourth layer and spread. So brain में जो pressure है वो कम हो जाएगा, and that hematoma is, that's why called safety valve hematoma. That's called a safety valve. If it's just a intracranial hemorrhage, it is very bad. Immediately the patient will die. If there is a fracture of the skull, it's still bad, but less bad because the blood will have space to come out into the fourth layer. Okay, so safety valve hematoma भी पढ़ लेना आप लोग. The blood which was intracranial hemorrhage through a fracture along with the fracture skull will ooze out of the fracture into the fourth layer. So the pressure in the brain would be reduced, not finished but reduced is a better word. Very good, reduced. Okay, so safety valve hematoma. So a lot of clinical things: more bleeding, prolonged bleeding, dangerous area, black eye, safety valve hematoma. Okay. The fifth layer is the pericranium or the periosteum. Pericranium, जिसको ब्रैकेट में periosteum लिखा है, तो वो कुछ नहीं है, but you need to understand that like the skull is made up of the parietal bone, the temporal bone, the frontal bone, and all that, and they are all covered by periosteum, but it's not one periosteum. Okay, periosteum covering the temporal would be one. Periosteum covering the parietal would be one, frontal would be one, and जहाँ पर suture है वहाँ पर periosteum आकर के अंदर जो lining है which is called the endocranium, बाहर में bone के periosteum है, pericranium है, और अंदर में endocranium है, और जहाँ पर suture है वहाँ पर pericranium is connected through the sutures with the endocranium. Okay, so what is happening, supposing this is a parietal bone, and there is a periosteum on the outside, and there is a endocranium on pericranium on the outside and endocranium on the inside, and there is suture. तो जहाँ पर suture है वहाँ पर वो join कर जाता है with the endocranium. Okay, तो चारों तरफ suture के अगर join कर गया तो there is a closed space between the bone and the pericranium. Pericranium और bone के बीच में एक space है जो बंधा, ओपन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्ट हो रहा है दूसरे बोन से, ये कनेक्टेड है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? एट द फ्यूचर द pericranium is dipping inside and meeting with the endocranium at all sutures all around. So there is a closed space. So whenever there is a collection of blood deep to the pericranium, अगर pericranium के नीचे bleeding है, not in the fourth layer, below the pericranium, then the bleeding will be confined to the bone. It will not go from the parietal bone to the temporal. क्यों? क्योंकि periosteum close कर दिया है चारों तरफ से, है ना. अगर इस तरह से है, supposing there is a parietal bone, तुषार समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पूरा ये बंद हो जा रहा है. The pericranium is closing at all these points. So अगर यहाँ पर bleeding होगा तो जो bleeding shape of the bone ले लेगा, and this is called as cephal hematoma. Cephal hematoma will be always taking the shape. अगर parietal bone में हुआ है तो parietal bone, और temporal में हुआ है तो temporal का shape ले लेगा. It will not move from the parietal to the temporal region. Whatever bleeding is below the pericranium will remain to that bone because the pericranium is attached to the sutures. Not to the sutures, via the sutures to the endocranium. Is it clear? So this is another very important. The cephal means cephalic, cephal hematoma. Okay. एक और स्वेलिंग होता है न्यूबॉर्न बेबीज में, जब उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबीज का जब नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, मदर के से जब निकलता है, द हेड इज गोइंग थ्रू अ वेरी स्मॉल
passage. So there's a lot of pressure. So at that time, there's sometimes the baby born with a collection of fluid, because यहाँ पर बिल्कुल ही दब गया था, तो that's called caput succedaneum. That's called caput. Now, how would you? A caput succedaneum is also a swelling. A sepal hematoma is also a swelling. How would you differentiate? Caput succedaneum is in the fourth layer, and it's not bounded to the bone. It's spread all over. A sepal hematoma is below the pericranium, so that would be of the shape of the bone. So caput means the head. Succedaneum, caput succedaneum. ठीक है, तो बुक से देख लेना आप लोग. Caput succedaneum, sepal hematoma. So these are the clinical features. Very quickly going through the blood supply, nerve supply, because it's more theoretical. समझाने वाली चीजें मैं समझा दिया आप लोग को. The nerve supply. The nerve supply is sensory and motor. Please listen carefully. जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, I won't let you go. So अभी है भी टाइम 2-4 मिनट. जिसे लंच के लिए जाना है चले जाओ, because I'll complete. I'll take 10 minutes to complete. Let me tell you also. Please be silent. अगर तुम लोगों को भूख लग रही है तो अभी चले जाओ, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ, मैं बात नहीं करना. अच्छा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बस डायग्राम बना रहे हैं. This is the scalp, these are the ears, this is the frontal part, this is the occipital part. Okay, so you have the nerve supply. You have 5 nerves which are in front of the ear and 5 nerves which are behind the ear. How many in front of ear? 5. And how many behind the ear? 5. Of the 5, 4 sensory, 1 motor front of ear, 4 sensory, 1 motor behind the ear. 5 में से 4 सेंसरी हैं और 1 मोटर. ठीक है, तो जो मोटर नर्व है, जो मोटर नर्व है फ्रंट एंड बिहाइंड द ईयर, मोटर सप्लाई कौन कर रहा था? हमने कौन सा क्रेनियल नर्व बोला था? फेशियल. तो मोटर नर्व एक आगे है एक पीछे है, तो आगे वाला कौन से मसल को करेगा बताओ? फ्रंटालिस. वेरी गुड. और पीछे वाला? ऑक्सीपिटालिस. और ये कौन है? ये ब्रांच ऑफ फेशियल है. इसका नाम है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल. टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल. Anyway, I'll go to that diagram is not in this book. Temporal branch of facial and पीछे वाले का नाम है posterior auricular branch of facial. Posterior auricular branch of facial. These are what? Motor nerves. अब 4 sensory हैं और 4, please don't talk. 4 sensory nerves in front of the ear हैं, 4 पीछे हैं. ठीक है, तो these are the sensory nerves. आ जाओ तुषार यार. कितना भी मॉडर्न क्लासरूम बना दे, मेरे लिए तो ये कोई काम का नहीं है. मेरे बोर्ड भी नहीं रहता. I want this light on actually. So now there are 4 sensory nerves which are in front of the ear and 4 behind the ear. तो अगर मिडलाइन है 1, 2, 3, 4. ओके, 1, 2, 3, 4. और एक
मोटर है, ठीक है। नाउ दिस इज सुप्राट्रोक्लियर नर्व, दिस इज सुप्राऑर्बिटल नर्व। नाउ व्हाट वाज द सेंसरी नर्व फॉर द फेस? हमने कौन सा बोला था फेस एंड स्कैल्प के लिए? ट्राइजेमाइनल, है ना। ट्राइजेमाइनल का अपर डिवीजन क्या था? ऑप्थैल्मिक। तो ये जो है सुप्राऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर बीच वाला है एसटी और एसओ। आउटर साइड O for outer, O for orbital. Supraorbital is the outer one. Inside one is the supratrochlear. They are branches of ophthalmic nerve. इतना याद रखना. Which is the first division of trigeminal. ठीक है? Supraorbital and supratrochlear. Supraorbital and supratrochlear. किसी को बात करते मैं देखूंगा ना तो मैं पूरे लंच में यहीं बैठा के रखूंगा। सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सॉरी, ये है सुप्राऑर्बिटल। लिखा हुआ वहां पर भी है बट मैं अपनी डायग्राम में बताना चाह रहा हूँ। सुप्राऑर्बिटल। देन थर्ड वन इज जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ठीक है। नाउ मिड पार्ट ऑफ द फेस को कौन सप्लाई कर रहा था? मैक्सिलरी, है ना। तो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ zygomatic division of maxillary nerve. Zygomatico temporal. A fourth one is auriculotemporal, which is from mandibular. तो चार जो हैं, दो ऑप्थैल्मिक के हैं, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर। तीसरा जो है जाइगोमेटिको टेम्पोरल, वो मैक्सिलरी का ब्रांच है। मैक्सिलरी का जाइगोमेटिक और जाइगोमेटिक से ये निकला है, मैक्सिलरी का है। और थर्ड जो है ऑरिकुलोटेम्पोरल, वो मैंडिबुलर का है। तो कर कौन रहा है? ट्राइजेमाइनल नर्व ही कर रहा है ना। फ्रंट ऑफ अपर ईयर के आगे वाले पार्ट, पीछे वाले पार्ट को सर्वाइकल प्लेक्सस करता है, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 C2 C3 C4 ये सब, ठीक है। और इसका चार नर्व हैं। एक मोटर की बात हम लोग पहले कर चुके थे। बिहाइंड द ऑरिकल यू हैव द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। बहुत ही पहला है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। उसके बाद लोगो याद रखना है, LOGO, लोगो। लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल। पहला ग्रेट ऑरिकुलर, GA ग्रेट ऑरिकुलर, उसके बाद लोगो, ठीक है। लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, ओके। और जब ग्रेटर बोल देते हो तो तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो और कोई नाम नहीं मिला तो एक और ऑक्सीपिटल था तो उसको थर्ड ऑक्सीपिटल का नाम रख दिया। तीन ऑक्सीपिटल थे, एक को लेसर कर दिया, एक को ग्रेटर कर दिया, लोगो। तो फिर अब तीसरे को क्या कहता? दे वर टोटली bereft of ideas, so they called it third occipital. How innovative, वाह। पहले दूसरे को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही कर देता था। तो एनीवे, दीज आर द बिहाइंड द ईयर्स। तो ये 10 नर्व अभी याद करो पहले। खाना तो खाते रहोगे, जिंदगी भर खा पाओगे। मोटर में कौन सा है? टेम्पोरल ब्रांच और फेशियल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर। सेंसरी में सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ऑरिकुलो टेम्पोरल। दो टेम्पोरल है, जाइगोमेटिको जो मैक्सिलरी का है, ऑरिकुलो जो मैंडिबुलर का है। भूख लग रही है? हाँ। और पीछे बिहाइंड द ईयर ग्रेट ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर। फिर तीन ऑक्सीपिटल है, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल। पहला दो वेंट्रल रैमाई से है, लास्ट टू डॉर्सल रैमाई से है। ये याद कर लेना C2 C3 किसका है। तो ये सेंसरी सप्लाई हो गया, है ना। आर्टीरियल सप्लाई इज इजियर। 5 आर्टीरियल सप्लाई में लगा दे रहा हूं। आर्टीरियल सप्लाई देयर आर टोटल ओनली 5 arteries, 3 in front of ear and 2 behind.
फ्रंट ऑफ ऑरिकल वही नाम वही है, बट यहाँ पर नर्व नहीं है, आर्टरी है, याद रखना। सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, पहला दो तो सेम था, तीसरा नया नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो ये कौन से आर्टरी के ब्रांचेस होंगे? एक्सटर्नल कैरोटिड या इंटरनल? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस होंगे। और बिहाइंड द ऑरिकल पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल किसका ब्रांच होगा? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। तो ऑल दीज आर ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बट नॉट these two. These two are branches of internal carotid artery. तुम कहोगे इंटरनल का असर बाहर कैसे कर रहा है? तो ये अंदर ब्रेन में गया था, वहां से इंटरनल कैरोटिड के कुछ आर्टरीज बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट टू आर ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड का एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच है, तो ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट थ्री आर ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल। तो सिर्फ नाम नहीं रखना है, तुमको आइडिया रहना है कौन एक्सटर्नल से आ रहा है कौन इंटरनल। पहला दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ऑप्थेल्मिक आर्टरी एक ब्रांच है, उसका ब्रांच है, ठीक है, ओके। ऑप्थेल्मिक का भी ब्रांच एक और ब्रांच है, उतना मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग भाग जाओगे, ठीक है। तो ये है, पहला दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, नेक्स्ट थ्री एक्सटर्नल का है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ छूटा होगा तो देख लेना। One thing. जो गेपिंग ऑफ वुंड क्या होता है? अगर स्कैल्प को अगर तुम काट रहे हो, है ना, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस किस डायरेक्शन में आ रहा है? आगे से पीछे जा रहा था या साइड टू साइड जा रहा था? आगे से पीछे। तो अगर स्कैल्प यहाँ से वर्टिकली कटेगा, ठीक है, तो तब तो वुंड लीनियर रहेगा। बट अगर ट्रांसवर्सली कटेगा, ऐसे ऐसे कट होता है, तो आगे से भी खींचेगा पीछे से भी, तो जो वुंड है वो इस तरह से ऐसे फैल जाएगा, और जो वर्टिकली कटेगा वो ऐसे पतला रहेगा। दिस इज कॉल्ड गेपिंग ऑफ वुंड। So transverse cut, there will be gaping of wound because they will be pulling each other. And vertical cut would be the wound जो transversely कटेगा उसमें ज्यादा गैप रहेगा, और जो vertically कटेगा, तो as a surgeon तुम कौन सा कट दोगे? Vertical.